The Supreme Court has put on hold the bail granted to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar by the Delhi High Court, ruling that he will not be released from custody. A bench led by Chief Justice of India, Surya Kant, said that the case raises substantial questions of law and issued notice staying the HC order. The court noted that Sengar is already serving a sentence in another criminal case and will continue to remain in jail. Not only that, the CGI also flagged serious implications of the High Court's interpretation on who qualifies as a public servant. The order came as the top court heard the CBI's plea against the suspension of Sengar's life sentence in the 2017 Unnao rape case. सबसे पहले तो आज आप क्या कहना चाहेंगी, बधाई देना चाहेंगे आपको कि आपकी इतनी लंबी लड़ाई रही, अभी लड़ाई और बाकी है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद थी, मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत बहुत, ताकि हमें न्याय मिला और जस्टिस ने मुझे न्याय दिया, जज साहब ने मुझे न्याय दिया और न्याय पे उम्मीद है। मैं अभी आगे की लड़ाई लड़ूंगी और उन्हें फांसी तक लेके जाऊंगी, अपने पिता के हत्यारों को और अपने जो मेरे साथ मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया और हमारे साथ रेप किया और मुझे अपहरण करवाया और मुझे 60,000 रुपया में बेचवा दिया किसी अदर आदमी से, ऐसे मेरे साथ ये सब हरकतें की थी उन्होंने। ये लड़ाई आपके लिए आसान नहीं थी। साल 2017 से लेकर फिर साल 2019 में, फिर उसके बाद FIR भी फाइल नहीं हुई थी, पहले धमकियां मिल रही थी आपको, फिर उसके बाद दिसंबर होते होते फैसला आया कि उन्हें उनका जो आजीवन कारावास है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस वक्त क्या था आपके मन में जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से मेरा मन उदास हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट को मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हर जज एक जैसे नहीं होते मैम। वो जज साहब और CBI का आयोग कुलदीप सिंह सेंगर के फेवर में उन्होंने ऐसा कराया था ताकि ऑर्डर ऐसा हो और पीड़िता अपने घर में कैद हो जाए। कोर्ट में ये भी कहा गया आज कि कुलदीप सेंगर उस वक्त एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था, इन्फ्लुएंस करता था लोगों को और उसी क्षेत्र का वो MLA भी था। जी, 4 बार के MLA थे, BSP से थे, कांग्रेस से थे और सपा से थे और प्रेजेंट टाइम पे BJP से थे, मेरे महाराज जी की पार्टी से। किस तरह से आपको प्रेशराइज किया गया और धमकियां भी मिली? आपकी मम्मी से और आपकी बहनों से भी हमने बात की, उन्होंने भी बताया कि आज भी धमकियां मिलती है, सड़क पे जाने से आज भी वो डरती हैं। जी, डर तो है, ये परिवार की सुरक्षा, जयवंतियों की सुरक्षा, मेरे पैरोकारों की सुरक्षा जो हमारे केस में जमानत ले रखा है, गवाही ले रखा है, उनको भी खतरा बना हुआ है। और मेरे 2 बच्चे हैं मासूम से, मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया, इसके ऑर्डर सुनते ही मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। बताओ, मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन फिर भी दिसंबर में जब ऑर्डर है उसके बाद आपके हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया, उसके बाद भी मैं अभी भी संघर्ष कर रही हूँ। मैंने कैसे संघर्ष किया, अभी भी कर रहे हूँ। मेरे पति की कहीं जॉब नहीं लग पा रही है, हम बराबर फिर भी लड़ाई लड़ रहे हूँ ताकि हमें ऐसे सक्षम किया जाए। मैं अपने महाराज जी से बोल रही हूँ कि मैं अपने ताकतवर इंसान से ताकत से लड़ सकूँ ताकि मैं उससे सामना कर सकूँ। Do you want me to be happy when the girl has been forcibly taken away by the CRPF here? Should I be happy? I don't even get a chance to speak to her, to inform her what the order is. Do you think I should feel happy about this? Do you feel I should feel happy for the fact that her father was killed, murdered by this Kuldeep Singh? Do you think? No. Is this a sign of relief? Is this relief to the victim who doesn't know tomorrow whether her small children will be killed, who don't have any security? You need more protection for her? No, I leave it to the people of the country now and the judicial system to ponder over these things. Is this relief or is this no relief at all? It is just that she was sent to gallows and she's been stopped from being sent to gallows for a limited period. All right, you heard the rape survivor's bite and what she has to say on the Supreme Court verdict. Now let's take you through the big takeaways of the Supreme Court verdict. Now, first up, of course,
Number one is Kuldeep Singh will stay in jail. Then the Delhi High Court order suspending Singh, that's the issue noticed by the Supreme Court. Apart from that, the Delhi High Court SC says no question of Singh liberty since he's already in jail. And apart from this, survivor to file a separate application. So these are the list of the top takeaways of the Supreme Court verdict. And for more on this, my colleague Tejshri is now joining me live. Tejshri, a major setback for Sengar with the SC staying the High Court order on him. And now we're learning that Sengar has 2 to 4 weeks to file his response. Well, absolutely. It's the 4 weeks time that the Supreme Court has given to Kuldeep Singh to file a response in this entire case, keeping in mind the sensitivity of the issue. And in fact, as we spoke to the survivor herself, she in fact narrated the entire ordeal as to what happened since the year 2017, then in 2019, and then now in the year 2025. In fact, she also, in fact, narrated so as to how she was not just kidnapped, but raped, gang raped, and stole at a cost of ₹6,000, family being threatened, father being killed. And now, in fact, she has a bit of hope after the court's order, the Supreme Court's order, in fact. But they say that it is a partial relief to them, and they will only believe that they have got the entire justice only when the main accused, who is Kuldeep Singh, will get a thorough and the strictest punishment in this case. Now, if we talk about so as to the arguments of the Supreme Court, then remember that the Solicitor General Tushar Mehta has very categorically stated that this is a horrific case, and not just that, but also in fact the MLA was a very powerful and influential person and was the MLA of the very constituency where the survivor resides, and that's why in fact he kept on harassing and threatening her at regular point of intervals. As far as during the hearing as well, she was asked to not to give the statements, and keeping all these things in mind, in fact Supreme Court has stated that the Sengar has to file reply in 4 weeks, and as of now Supreme Court has stayed the relief, because Supreme Court has stated that they are inclined to put a stay on this entire case, because the manner in which Delhi High Court had put the order, it was quite we can say that it was quite heartbreaking for the victim, for the survivor herself, and that is why now all remains to be seen that after the reply is being submitted by Kuldeep Sengar as well, what kind of reply or in fact the plea will be filed from the side of survivor as well.